Hello students, today's video lecture is going on class 12 physics. That is the lecture number 5 of chapter light. In previous video lecture, we have discussed about the formula of concave mirror and convex mirror. So today we will start the next topic, that is linear magnification. Linear magnification. This is the linear magnification. Actually, this topic is related to the ratio of heights of object and the image, and it is denoted by small m. It is denoted by small m. Actually, linear magnification is the ratio of height of object and, or we can say, to the height of image. So m equals to I upon O. Now what is I? Where I equals to height of image and O is this is O, that is height of object. Clear? So m equals to I upon O, and it can be found also. For example, it can be described in another ways, like suppose that this is the concave mirror and we will form the image by the concave mirror. Let this is the focus, that is F, and next is center of curvature C. Now we place the object outside the center of curvature but before the infinity. So in this case, if the ray of light goes parallel to the principal axis which comes from the object, and it will passes through the focus like this. And next, if we are taking another ray diagram, that will be for if ray of light passing through the center of curvature, then after the reflection through the mirror, it going back through the same path. So the intersecting point where these are the reflected rays cut to each other, there will be the image. Suppose that O dash, that is the object, and the image is I dash. In this condition, we can check that, for example, O dash C, there is a triangle, and also I dash C is another triangle. So in this condition, I would like to draw here these triangles. Suppose this is the principal axis, that is this, and now this is the object, that is O dash, and
I dash. So like this. Okay, and this point is I dash. Now next triangle is this. There is a triangle O dash C and I dash C. In these triangles, we can see that this angle is 90 and that will be also 90. This triangle is equal to this because these are the alternate angles. So alternate angles. So इस कंडीशन में हमारे पास ये जो दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये बिल्कुल इक्वल होंगे. ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. सो ये एंगल भी इस एंगल की क्या हो जाएगा? इक्वल. सो दीज आर द सिमिलर ट्रायंगल्स. ओके, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनके साइड के रेशियो जो होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. सपोज दैट ये जो परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर के साथ जो रेशियो होगा, इसके बेस का रेशियो इसके बेस का रेशियो क्या होगा? इक्वल. सो यहां पर हम लोग राइट कर सकते हैं दैट मींस ये जो हमारे पास मिलेगा, ये जो ट्रायंगल है वो O डैश C एंड I डैश C. सो यहां पर इनका जो प्रोपोर्शन होगा ये, ओके, इसको हम लोग रेशियो का प्रोपोर्शन हम लोग टोटली यहां से ले सकते हैं. कैसे? एक्चुअली यहां पर अगर हम लोग राइट करें, ये जो ट्रायंगल ऐसे करके ड्रॉ करें इसे, फॉर एग्जांपल जिस एंगल पर ये इंसिडेंट है उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होगी लाइक दिस. तो यहां पर जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर. आप देख सकते हैं सपोज दैट दिस इज द पॉइंट P. इन दिस केस ट्रायंगल O डैश P जो है वो सिमिलर होगा I डैश P. इन दिस केस रेशियो जो O डैश का I डैश के साथ है वही रेशियो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा OP और इसका IP का. क्लियर है? सो यहां पर हम लोग राइट कर सकते हैं इस कंडीशन में इन ट्रायंगल O डैश P एंड ट्रायंगल I डैश P. इस केस में हम लोग ये जो डिस्टेंस है इसको लिख सकते हैं IP ये. तो इसका रेशियो हम लोग को इस टोटल लेंथ के साथ लेना पड़ेगा. अपान में कितना? OP दैट्स इक्वल टू, यहां पर अभी हमको मिल जाएगा क्या? I डैश और अपान में O डैश. सो I डैश और अपान में O डैश. बड़ा एक बात बताओ, IP is the distance of image that will be minus V and OP is the distance of object that is minus U, and we can write here this is the height of object that will be positive and this is the height of image that should be negative because this is below the principal axis. Now we know that I dash that's equal to I. Okay, or we can write here this is the y2. Okay, and it will be minus y2 because this is the below the principal axis. But O dash that's equal to, there will be this height. So suppose that the height of object is y1 and this is the upside to the principal axis, so this will be positive. And IP that's equal to, let this is the distance of object that will be V and there will be sign negative because this is the left from the pole of the mirror. And next is O to P that's equal to U and this is also left side to the pole of the mirror, so it will be also negative. So all the terms we can put here. IP that is minus V upon ये OP that is minus U. Okay, that's equal to, here is the I dash that is minus Y2 और अपान में Y1. So इस केस में ये दोनों कैंसिल. So यहां से हमारे पास मिल जाएगा Y2 upon Y1 that's equal to minus V upon U.
that's equal to m. So the magnification of the mirror m equal to minus v upon u, and it is also equal to I upon o. I is the height of image and o is the height of object. So this is the formula for the magnification, and this is simply linear magnification of the mirror. Okay, clear that? So this is the last topic for the reflection of light. Now we can use the formula for the focal length of concave, also convex mirror, and then we can solve the questions related to these topics. Now the next topic is, actually before starting the next topic, that is the refraction of light, we have to solve some examples related to reflection of light through the mirror. Now there is a question. Find the focal length of the mirror by which image is formed at 20 centimeter away from the mirror of the object which is placed 30 centimeter in front of 30 centimeter distance apart from mirror. ओके, सो यहां पर हमें ऐसे मिरर का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है जिससे जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो 20 सेंटीमीटर मिरर से डिस्टेंस है उसका, और जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पर। सो यहां पर आप चेक करें, गिवन आपके पास क्या है, गिवन है आपके पास u की वैल्यू, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सो 30 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू, एंड v की वैल्यू यहां पर क्या है, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब है कि वो मिरर से पहले कितने सेंटीमीटर पर बनता है डिस्टेंस पर, 20, सो माइनस में कितना, 20 सेंटीमीटर, नॉट द बिहाइंड ऑफ मिरर, ये मिरर के फ्रंट में ही इमेज बन रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। So we have to find the focal length. We know that 1 upon f equals to 1 upon v and plus 1 upon u. Now 1 upon f, that's equal to 1 upon v. In place of v we can put minus 20 and plus 1 upon u, that is minus 30. Now 1 upon f, that's equal to minus 1 upon 20 minus 1 upon 30. We can take it. Now 1 upon f, that's equal to, take minus sign as common, so it will be 1 upon 20 plus 1 upon 30. Now
cross by the cross multiplication 30 plus 20 divided by 600, and now 1 upon f that's equal to minus that will be plus 50 and divided by 600. The value of f that's equal to minus 600 divided by 50. Okay, so that's equal to 12 centimeter, and here the f that is plus value, and here the negative sign, so also take the minus sign, and this minus sign indicates that this negative value, that is focal length is negative, so that mirror is concave mirror, because in concave mirror the focal length is negative and in convex mirror focal length is positive. So if अगर यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोलता है कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन दिस image formation, then the answer is concave mirror. Okay, and nature of the image भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये f की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर v की वैल्यू -20 गिवन था, इसका मतलब है कि वो हमारे पास कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा और वो इन्वर्टेड बनेगा. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, थैंक यू.